Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. If you remember, in last lecture we studied about the market. We had a just basic introduction about the market. Let's have a look. Market is nothing but an arrangement through which buyer and seller come in close contact with each other. That close contact can be directly or indirectly. When they come in close contact, they have an exchange of goods and services takes place among them. The term market is not only according to Augustine. The term market is not only a particular place in which things are bought and sold, but it is a whole of any region in which buyer and seller are in close contact with each other, that the price of same goods turn to be equally, easily and quickly. Now we have studied the classification of market. Market has been classified in three, that is place, time and competition. Then further, place has been classified as local market, national market, international market. Local market is a place where goods are bought and उधर ही प्रोड्यूस करते हैं और उधर ही बेच के खत्म होता है. National market, it is beyond our country's limit. International market, it is beyond our country's boundary. Then time is very short period can be of few days or a month. Short period can be of a year, and long period is up to 5 years, and very long period is more than 5 years. Now next is the perfect competition. Perfect competition isn't just imaginary concept. According to Mrs. Robinson, perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. We have seen the features of perfect competition, that is large number of buyer and seller, homogeneous product, free entry and exist, single price, perfect knowledge of market, perfect mobility of factor of production, absence of transportation cost and no government intervention. These were the features of perfect competition. Then we saw price determination under perfect competition. In this, it is a point of equilibrium where demand and supply meet each other. So that point is called as the E. That is known as the point of equilibrium. Now we'll move towards our next part, that is the monopoly competition. Imperfect competition. In that what is imperfect competition? Imperfect competition is a type of market showing some but not all the features of the competitive market. In that first type is monopoly. Mono means single, poly means seller. So the monopoly is a market in which there is only one seller who controls the entire market supply for a product which has no close substitute. मतलब वो अकेला ही मार्केट पूरा रूल करता है. उसको पता है उसके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो जो भी दाम लगाएगा पीपल विल प्रोड्यूस. सो मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर. जब एक टाइम था जब निरमा हैड इट्स मोनोपोली. व्हेन निरमा वाज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इट हैज इट्स मोनोपोली, बट टुडे आज उसका मोनोपोली नहीं है. सेम थिंग विद द पार्ले-जी. पार्ले-जी कैप्चर्ड रूरल, अर्बन, ऑल द मार्केट्स. एक टाइम था जब पार्ले-जी हर जगह मिलता था. आज क्या हो गया है, मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया बिस्किट्स के लिए. लाइक अपार्ट फ्रॉम पार्ले-जी ऑल अदर ऑल्सो बिस्किट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. सो अकॉर्डिंग टू E.H. Chamberlain, monopoly refers to a single firm which has control over the supply of product which has no close substitute. Chamberlain, what he says, monopoly is a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute. उसका कोई close substitute नहीं है और पूरे market पे he has the control over the market through his product, as there is a no close substitute for his product. Now next we are going to see is the features of the monopoly market, that is the single seller. See, the monopoly name itself indicates that he is a single seller. So in monopoly there is a no close competition, as there is no close substitute to his product, but there is a large number of buyer. No close substitute, there is no close substitute for the product of the monopolist. Therefore buyer has no choice, he has to buy the product at whatever cost the monopolist wants to sell. There is
Elasticity of demand for this product is either zero or negative. Barriers to entry. No one can enter the market. Q. Entry of rival is restricted due to legal, national, technological barrier which do not allow the competitor to enter the market. He has got some technology. Why his product is unique? Why he has complete control over the market? Because he had created something which is very unique, which is of good technology. So before entering, other competitors has to face his technology, has to face everything whatever he has unique. It actually becomes very difficult. So other companies, other competitor finds difficult to enter the market. So there is a barrier to the entry. Complete control the market supply. What he has the complete control over the market supply. Since he is the single seller, he has the complete control over the market. He has complete control over his product. Now is the price maker. But obviously जब पूरा मार्केट उसके पास है, जब उसका प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट ऑब्वियसली ही इज द प्राइस मेकर. ही विल मेक द प्राइस. वो जो चाहिए प्राइस लगाएगा, राइट. सो ही इज द प्राइस मेकर. मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल्स द होल मार्केट सप्लाई. मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर. नेक्स्ट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ही कैन डिस्क्रिमिनेट द प्राइस. हाँ, अगर आपको पता है कि ये मेरा राइवल है बट इसको प्रोडक्ट चाहिए, व्हाट ही विल डू, ही विल ज़्यादा प्राइस पे उसको बेचेगा. यू नो, इफ़ ही नोज, इफ द मोनोपोलिस्ट नो कि बाबा ये गरीब है, ही नीड्स सम मनी, ही नीड्स सम बिजनेस, व्हाट ही विल डू, उसको वो प्राइस थोड़ा सा कम लगा देगा. सो किसके लिए प्राइस ज़्यादा लगाना है, किसके लिए प्राइस कम लगाना है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मोनोपोलिस्ट. ही इज़ द प्राइस मेकर. सो ही कैन वो डिफरेंट प्राइस लगा सकता है डिफरेंट कस्टमर्स के लिए. thus price discrimination is an important feature of the monopoly competition. अभी अपन ट्रेन में जाते हैं और इफ़ वी ट्रैवल इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड ऑल, व्हाट वी सी, इफ़ यू आर अ सीनियर सिटीजन, आपका टिकट का रेट अलग रहेगा. इफ़ यू हैव अ स्टूडेंट्स पास, योर टिकट रेट विल बी डिफरेंट. बट इफ़ यू आर नॉर्मल पीपल हु ट्रैवल सम टाइम एंड ऑल, तो क्या है, आपके लिए अलग दाम रहेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग ऑन. नेक्स्ट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री. ये यहाँ पे मोनोपोली अकेला है. ही इज़ द सिंगल पर्सन, ही इज़ द सिंगल सेलर. सो देयर ही कैन, फर्म इटसेल्फ इज एन, उसके लिए जो फर्म है वही इंडस्ट्री है. सो व्हाई डू वी नीड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री हियर? So there is no need to discriminate between the firm and industry in this market. So simple. What is a monopoly market? Monopoly is a mono means single, poly means seller. So monopoly means single seller. He has complete control over the market. And the features of monopoly market are single seller, no close substitute, barriers to entry, complete control over the market supply, price maker, price discrimination, no distinction between firm and industry. These are the feature of monopoly market. Now let's move towards the next slide. There are certain types of monopoly. So there are certain types of monopoly in the market. That is private monopoly. Private monopoly यानी क्या, उस अकेले इंसान का private monopoly उसने किया है. Private monopoly is like for example Tata. Tata has a private monopoly of his product, जो कि वो प्राइवेट सारा बना चुका है. पब्लिक मोनोपोली, बेस्ट एग्जाम्पल इज द इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे हैज़ अ कंप्लीट मोनोपोली. अभी कुछ ट्रेनें उन्होंने प्राइवेट में चलाने दी है, इवन प्राइवेटाइजेशन दे हैव स्टार्टेड, बट द मोस्ट इज एवरीथिंग इज स्टिल विद द पब्लिक. स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन्स विथ इट. Now next is the legal monopoly. Legal monopoly मतलब patent rights and everything. See, if you are producing something, you get some legal rights. You get your patent right, copyrights, everything. That is nothing but a legal monopoly. Legal monopoly, like lawyer has their ID number. See, if you travel by rickshaw also, you will see that
there is a one batch of golden color. What is that? It is their number, license number, and everything is written on that. That is just to show that there is a legal monopoly of them. That is the natural monopoly. It depends upon the climatic condition. Natural monopoly depends upon the natural condition like climatic, rainfall, specific location. known as सी जैसे अपन बोलते हैं कश्मीर के एप्पल, वी सी कश्मीर के एप्पल वी सी कि यार बहुत टेस्टी रहते हैं, बहुत जूसी रहते हैं, जस्ट बिकॉज बाय नेम इटसेल्फ दे हैव क्रिएटेड देयर ओन मोनोपोली. लाइक व्हीट ऑफ पंजाब, अपन बोलते हैं गेहूँ के पंजाब बहुत अच्छे रहते हैं एंड ऑल. राइस इज फ्रॉम साउथ, कर्नाटक के चावल बहुत अच्छे रहते हैं, वी से दैट. दिस इज ऑल नथिंग बट अ नेचुरल मोनोपोली. Next is the simple monopoly. In simple monopoly, seller or a firm changes a uniform price for its product to all the buyer. इसमें क्या होता है, सिंपल छोटा सा मोनोपोली क्रिएट किया जाता है. Now discriminating monopoly. In discriminating monopoly, firm charges different price to the different buyer for the same product, right? फर्म सबके लिए अलग अलग प्राइस डिटरमाइन करती है. लाइक इफ़ यू गो टू एनी डॉक्टर, अगर आप देखोगे ना बहुत से डॉक्टर आजकल क्या प्रैक्टिस करते हैं, इफ़ दे सी कि बाबा ये गरीब आदमी है तो उनके लिए फीस अलग रखते हैं वो. एंड इफ़ दे सी कि नहीं बाबा ये अच्छा खासा आदमी है, ही कैन अफोर्ड, देन दे चार्ज हिम मोर. आप आपके सोसाइटी में ही जाके देखो, आपके सोसाइटी में जो भी डॉक्टर वगैरह रहेंगे ना, जस्ट लुक व्हाट फीस ही चार्जेस फॉर द people coming from village area or people coming from slum area, and वही लोग जब and the people coming from middle class and upper class, they will charge different price for all of them. I have seen this personally, I know it very well. So next, this is the discriminating monopoly. Same thing with the lawyer. Even lawyer charge different fees for the different people. उनको अगर लगता है कि भाई ये बड़ा आदमी है, अच्छा खासा फीस दे सकता है, they will charge him more. बट इफ़ दे नो कि ही इज़ पुअर, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अफोर्ड, वो बोलते क्या तुझे जितना देना है उतना दे दे, तो छोड़ दे. सो दिस इज़ नथिंग बट अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. नेक्स्ट इज वॉलेंटरी मोनोपोली. टू अवॉइड कटिंग थ्रोट कॉम्पिटिशन, सब मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, जिनका जिनका लगता है कि वह मैं मोनोपोली क्रिएट कर सकता हूँ, दे ऑल कम टुगेदर एंड द फॉर्म ऑफ मोनोपोली मार्केट. This facilitates them to maximize the profit. For example, the organization of petroleum, they came together and they form a voluntary monopoly. So there are certain types of monopoly like private monopoly, public monopoly, legal monopoly, natural monopoly, simple monopoly, discriminating monopoly, and volunteer monopoly. I hope about monopoly competition, monopoly market, everything is clear. Now we will go to the next market, that is oligopoly. Oligopoly, it is a market where there are few firms in the market producing either a homogeneous product or a different product. What is happening here? They are producing a same product और थोड़ा सा अलग product produce कर रहे हैं वो in this market. The term oligopoly is derived from the Greek word oligo, which means few, and poly means seller. It is that market where there are few firms in the market producing either a homogeneous product or a different product. For example, mobile service provider, cement companies, what are they doing? They are creating their oligopoly market. So now this is nothing but a oligopoly market. Next are the features of oligopoly market. Few firms or seller. There are only few firms and seller in this market. This firm dominate the market and enjoys a control over the price of the product. क्या होता है? They try to control the price of the product. Interdependence. The seller has to respect any action taken by the competing firm. बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो है नहीं, बट जितना कंपटीशन है उसमें वो लोग ट्राई करते हैं कि बाबा मैं उससे कैसे बेटर करूं एंड हाउ कैन आई ओवरकम हिज कंपटीशन. सिंस देर आर फ्यू सेलर इन द मार्केट, इफ एनी फर्म मेक्स चेंज इन द प्राइस, all other firm or industry also try to make the change and also try to face the competition. Then next is the advertising. Advertising is one of the most important instrument in the market. A firm start
and aggressive in try to attract the market through their marketing concept. They try to capture the attention of large number of customer so that they can attract so that they can sell more. Customer get attracted toward their product and they can sell more. Now entry barrier. There is an entry barrier in this product. How come entry barrier? The firm can easily exit from the industry whenever they want, but it is difficult for them to come back in the market. क्योंकि एक बार मार्केट से चले गए तो आपका कंपटीशन किसी और के साथ खत्म हो जाता है. यू आर completely thrown out of the market, but it is very difficult to enter that market again. Why so? क्योंकि एक बार सब लोगों ने आपको मार्केट से बाहर निकाल दिया तो वापस उस मार्केट में जाके अगेन यू फेस दैट सेम कॉम्पिटिशन. इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट एंड इट लीड्स टू ओनली लॉस ऑफ द प्रोडक्ट. सो एंट्री बैरियर इज देयर. लाइक यू कैन easily quit from the market, but you cannot enter the market easily. Then next is the lack of uniformity. There is a lack of uniformity among the firm in terms of their size. Some firm may be small while other may be big, और उससे भी बड़ा साइज का हो सकता है. मतलब फर्म जो भी है, इंडस्ट्री जो भी है, वी कांट से कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही रहेगी ओलिगोपोली मार्केट में. ऐसा कुछ नहीं रहता. All big, small firm, all can stay in this market. So there is a lack of uniformity in the market. Uncertainty. There is considerably an uncertainty in this type of market due to there is a difference in the behavior pattern. Rival, अभी दो rival एक साथ मिलके, like we see banks how they collaborate with each other. Best example is like Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank. They have come together, right? से कितने बैंक्स दे हैव केम टुगेदर एंड दे हैव फॉर्म एन यूनिक बैंक, दे हैव फॉर्म एन मर्जर ऑफ इट. सो देयर इज एन अनसर्टेनिटी. आप पता बोल नहीं सकते कि कब आपका कॉम्पिटिटर किसी और के साथ जाके मिल जाए एंड दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन यू. सो देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन द मार्केट. नाउ नेक्स्ट इज द, आई होप ओलिगोपोली इज क्लियर. इट रेफर्स टू अ फ्यू फर्म इन द मार्केट producing same or the differentiate, थोड़ा सा differentiate product. Then the features of oligopoly market are few firm or seller, interdependence, advertising, entry barriers, lack of uniformity and uncertainty. Now next is the monopolistic competition. Monopolistic competition is very realistic in nature. In this market there is a feature of some perfect competition and some monopolistic competition. It's just a mixture of perfect competition and monopoly competition, monopoly market. According to Chamberlain, monopolistic competition refer to a competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitute. क्या है यहाँ पे monopolistic competition में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे seller है, हाँ, जो produce कर रहे हैं, those are producing close but not perfect substitute. बहुत एक दूसरे के क्लोज है बट दे आर नॉट परफेक्ट, बट दे आर नॉट एज परफेक्ट एज द अदर गुड्स. मतलब वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नाउ वी विल लुक एट द फीचर्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर. इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ सेलर आर लार्ज बट कंपेरेटिव लेस देन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अभी बहुत ज़्यादा सेलर है, इसका मतलब ये नहीं जो परफेक्ट कंपटीशन में जितने ज़्यादा सेलर है उतने इसमें भी है. ज़्यादा सेलर है बट एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन में जितने हैं उससे बहुत ज़्यादा कम है. सो देर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर. ड्यू टू दिस रीज़न सेलर बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली. अब थोड़े से ही सेलर है सो दे ट्राई टू बिहेव लाइक अ मोनोपोली, लाइक आई कैन कंट्रोल द मार्केट, ऐसा वो लोग सोचते हैं. नाउ लार्ज नंबर ऑफ बायर. इन दिस मार्केट जैसे फ्यू सेलर्स है वैसे ही यहाँ पे फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर भी है. अब लार्ज नंबर ऑफ बायर इसका मतलब ये नहीं जो परफेक्ट कंपटीशन में जितने ज़्यादा बायर थे उतने हैं इसमें नहीं, इसमें थोड़े से उससे कम है. सो कोई सिंगल बायर प्राइस इन्फ्लुएंस कम ज़्यादा बार्गेन नहीं कर सकता. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज द मेन फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. इन दिस मार्केट देर आर many firms producing a particular product
but the product of each firm is somewhat different from the other firm. See, it can be different in shape, size, color, and all and all and all. See, if we take some example, like if we take a toothpaste, huh, just by looking at the wrapper you can say ये close-up है, ये Colgate है, ये Pepsodent है, ये Dabur है. Even if I just erase the name and if I just give you a box, हाँ, you can easily say. और जब मैं पेस्ट निकाल के आपके ब्रश पे रखूँगी, even that time you can easily differentiate. Like Colgate is white in color, Dabur is brown in color, Pepsodent is had some bluish color, Close-up is red in color. So you can differentiate easily by its color, its shape and all everything. So product differentiation plays an important role in this market. You can differentiate the product easily. Now free entry and exit. One can easily enter the market and exit the market over here. Under monopolistic competition, there are freedom. आपको पूरी freedom है कि आपको लग रहा है you are gaining in the business, you can stay in the market. If you feel I am not gaining in the market, you can leave the market. There is no barrier or there is no restrictions in the market. One can easily enter the market and one can easily exit the market. Then selling cost. Selling costs are peculiar to the monopolistic competition only. It refers to the cost incurred by a firm to create differentiate. Like selling cost क्या करते हैं वो लोग, सबको अलग 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 देने का ट्राई करते हैं. It's very difficult for them to सेलिंग कॉस्ट अलग अलग रखने का. देन क्लोज सब्स्टिट्यूट. यहाँ पे जो भी है दे आर क्लोज टू, देयर इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट. लाइक फॉर एग्जांपल सी सोप, टूथपेस्ट, सबका एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है. लाइक आज मुझे कोलगेट डॉक्टर ने मना कर दिया, व्हाट आई डू, आई शिफ्ट टू पेप्सोडेंट तुरंत, राइट. लाइक हर किसी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है. इफ आई लुक एट द सोप ऑल्सो, लाइक आपको वो चाहिए, कोई अच्छा सोप चाहिए, भारी का सोप चाहिए, विल गो टू लक्स, विल लुक एट द पियर्स. हाँ, इफ नहीं, ओके ओके कोई भी सोप चलेगा, व्हाट विल लुक फॉर संतूर, जॉय. हाँ, there are many other soaps in the market, so there are close substitute to each other. Then concept of group. Under monopolistic competition, Chamberlain introduced the concept of group in a place of industry. Industry means a number of firms producing identical product. Like a group means a number of, like ग्रुप ऐसे फॉर्म करते हैं एंड दे प्रोड्यूस एक दूसरे से सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? सो दैट दे कैन हैव देयर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ऑल्सो. लाइक मेडिसिन कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, लाइक दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट बट थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. मेडिसिन कंपनी हैविंग द स्टिल दे हैव अ बिट मोनोपोली ऑफ इट एंड दे परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी है और मोनोपोली. Medicine industry is the best example of this monopolistic competition right now. So features of monopolistic competition. Before looking at the features, just look at the introduction, just look at the definition also. Monopolistic is nothing but a combination of perfect competition and monopoly market. Okay, then next are its features. Features of monopolistic competitions are fairly large number of seller, large number of buyer, product differentiation, free entry and exit, selling cost, close substitute and concept of group. So today here we end the chapter 5. So on next lecture we will be starting with the chapter 7. Chapter 6 I will teach you in the college itself, because there is some sums and all matter statistical, there is some statistic in that, so it would be difficult for you to understand from this presentation, so that will be taught later. Next we will be studying the 7th chapter, and just after now what you can do is just read the chapter properly. If you have any doubt, just mail it to me on my mail ID. Thank you.